Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that today as you already know that we have started chapter number 4. So today I will deliver its first lecture. The name of our chapter is environmental pollution, and the chapter is about pollution. So my dear students, let's start the lecture with an activity. So teachers can do this activity by showing pictures of different pollutions in the air, यानी कि air pollution दिखा सकती हैं, water pollution दिखा सकती हैं, and then ask the students that what is pollution and how human activities are contaminating our environment. So इन दोनों pictures को बहुत गौर से देखें, pause the video and then answer that what is pollution और human activities जो है वो कैसे environment को contaminate करेंगे. So pollution is anything that is added to the environment and has a bad effect on it. That is called pollution or pollutant. And next is कि harmful activities, human activities ऐसी क्या है जिनसे हमारा environment जो है वो contaminate हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हीं गाड़ियों में हम सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप डेली स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं और इन गाड़ियों से बहुत ज्यादा जो है वो स्मोक जो है वो रिलीज होती है जो कि हवा में मिलके एयर पोल्यूशन का बायस बनती है. एंड नेक्स्ट थिंग इज अक्सर लोग जो है अपने कचरे के डब्बे और जो गार्बेज होता है उसको पानी में डंप करते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होती है. सो ऐसी चीज जिसका एनवायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट हो रहा है. सो दिस हैज अ बैड इफेक्ट. दिस पिक्चर जिसमें आपको स्मोक रिलीज होती नजर आ रही है, दिस ऑल्सो हैज अ बैड इफेक्ट. सो किसी भी चीज का जिसका बैड इफेक्ट होता है आपके एनवायरमेंट में, basically that is not good for the environment and that is pollution. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the student learning outcomes. So in today's lecture, students will be able to define pollution and its types. So आज जो बच्चे हैं वो pollution को define कर सकेंगे, so what is pollution, and they will also be able to tell its types, उसकी कौन-कौन सी types होती हैं. Okay, my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. The world is sweet and green, and verily Allah is going to install you as vice surgeons in it in order to see how you act. So my dear students, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर इंसान को दुनिया में भेजा है और इस दुनिया को हमारे रहने के लिए एक बड़ी बेहतरीन सी जगह बनाया है. और अल्लाह ताला ये देखते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरीके से इस दुनिया के साथ या अपने अर्थ के साथ जो है हम कैसा सलूक कर रहे हैं. और बेसिकली हमारी एक्टिविटीज जो है मोस्टली इसी तरह की होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. Now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly listen to the question very carefully and then answer it. What are pollutants? So pollution को तो हमने define कर लिया. अब आप मुझे जल्दी से जरा सोचकर बताएं that what are pollutants? Such things which have a bad effect on the environment. वो चीजें जिनका बैड इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे कि गार्बेज, स्मोक. सो दीज आर ऑल पोल्यूटेंट्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. बर्निंग, गार्बेज. सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollutants. Okay, my dear students, now it's time for reading. So I request you all to please open page number 53 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, pollution. Pollution is the addition of something to our living environment, which degrades and damages the environment. These additional bad things are called pollutants, and the presence of these pollutants in the environment is called contamination. So, in other words, pollution is the accumulation of pollutants into the natural environment that causes adverse effects. So my dear students, ये आपकी साइंस 5 में अब हम जो पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्टिविटी में भी एक्सप्लेन किया था कि पोल्यूशन जो है वो कोई भी बुरा इफेक्ट जो है वो होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ऐड कर रहे हैं एनवायरनमेंट में जिसका नेगेटिव इफेक्ट होगा उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है. और जब वो आपके एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है और उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है तो दैट इज कंटामिनेशन.
सो पोल्यूशन जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर उसका बुरा इफेक्ट है. Okay, my dear students, so pollution can be in the form of chemical substances or energy such as noise, heat, light. Pollutants, the substances that cause pollution, can be foreign substance, excessive energies, or naturally occurring contaminants. So, my dear students, अब जो pollution है या जो pollutants हैं वो natural भी हो सकते हैं और artificial भी हो सकते हैं. सो ऐसी चीज जिसका बुरा इफेक्ट होगा वो नॉइज भी हो सकता है, वो ज्यादा लाइट भी हो सकती है. सो एनीथिंग दैट हैज अ बैड इफेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. So here you can see different types of pollution. So here you can see smoke coming out of the factories. Here you can see oil spillage into the water. Here you can see garbage everywhere on the land. So there are different types of pollution here. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards page number 53. We know that air, water and soil are essential for all living things on the earth. But unfortunately, they are harmed by different types of pollution. So अब हमने pollution को पढ़ लिया कि different जो चीजें हम environment में add कर रहे हैं, चाहे वो हम foreign तरीके से add करें, यानी कि हम खुद artificially add करें, या वो natural है, जैसे कि volcano eruption हो जाती है और such things. तो इन चीजों को हम पोल्यूशन का नाम देते हैं और इनकी वजह से मुख्तलिफ तरह की जो है वो पोल्यूशन कॉज होती हैं. जैसा कि आपको पता है, हवा, पानी और जमीन तीनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जब आप इनमें नेगेटिव चीजें ऐड करते जाएंगे तो वो इनको पोल्यूट करते जाएंगे. सो पोल्यूशन की जो डिफरेंट टाइप्स है, लेट्स हैव अ लुक एट देम. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. So, कोई भी बैड चीज अगर आप हवा में दाखिल कर रहे हैं तो that causes air pollution. अगर आप कोई बुरी चीज पानी में इंजेक्ट कर रहे हैं, that has a negative effect on the water, underwater life, then that is water pollution और वो आपके पानी को गंदा भी कर रही है. And then अगर आप ऐसी कोई भी चीज सॉइल में या लैंड पे डाल रहे हैं which has a negative effect on the land and the living things living there, so that is called land pollution. Okay, my dear students, now here you can see different types of pollution: smoke going into the air, air pollution; car exhaust, air pollution; then oil spillage into the water, dirty water आप पानी के अंदर फेंक देते हैं, this is water pollution. Garbage that is thrown into the water, that causes water pollution. Then there you can see we dump garbage everywhere around our houses, then that causes land pollution. So, my dear students, now is the time for evaluation. So, quickly answer the questions. What are pollutants? Any bad thing that is added to the environment and has a negative effect on it, that are called pollutants. Then, how pollution is affecting our natural environment? So, pollution is affecting our natural environment because it is adding negative effect to it. और इसकी वजह से जो है वो डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो है वो सफर करते हैं. सो दैट इज पोल्यूशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स? दे मे बी नेचुरल और दे मे बी फॉरेन. ओके, so my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your roll number, and then what is pollution, write it down. Then what are pollutants, which type of pollutants exist, then which type of pollution are harming our environment, कौन सी types of pollution है, then cut each picture and paste under correct heading. So here you can see different pictures. With the help of your teacher, under her guidance, cut these pictures and then paste them under the correct category. For example, underwater pollution will come under water pollution. Cut the picture and paste here. So this is how you will complete it. Okay, so pause the video and complete your worksheet. I hope everybody has done it. Now let's move forward towards the homework. So quickly note down your homework. You will do question number 1 and 2 from section B. So this is section number B. You will do question number 1 and question number 2. Define pollution and what are pollutants. How are they harmful to the environment? So very easy. You can also take for help from the book. अभी हमने किया है pollution क्या है. You have to define it. और किस टाइप के pollutants होते हैं और कैसे जो है ये harmful है हमारे environment के लिए. Then next is wrap up. So in today's lecture we have learned that pollution is addition of different pollutants in natural environment,
and presence of pollutants in environment is contamination. Pollutants may be in the form of chemical substance or energy. Pollutions are of three types: water, air, and land pollution. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. You have learned a lot of things about the pollution. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.